Hello friends, welcome back to Cooking Treats. So today we are back with another part of Chinese cuisine, and today we will be preparing chicken fried rice. हम बनाएंगे चिकन फ्राइड राइस, वो भी झटपट और बहुत आसान तरीके से. So without wasting any time, let's get into the kitchen. So the ingredients we need to make chicken fried rice is I've taken 2 eggs, spring onion, carrot, salt, soya sauce, pepper. This is chili sauce which we prepared, vinegar, and these are steamed rice. If you see, the texture of rice should be like this, because if the rice are sticky, then we won't be able to give that stir fry rice. We won't be able to make that. So फ्राइड राइस बनाने के लिए चावल जो है बहुत अच्छे से हमें स्टीम करना है. वो पूरी तरीके से कुक होना भी चाहिए और नरम नहीं होना चाहिए. बेसिकली एक एक राइस जो है हमारा एकदम छुट्टा जैसा रहना चाहिए. सो हमने लिए गाजर, स्प्रिंग अनियन, अंडा, सॉल्ट, काली मिर्च, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस. जो हमने बनाया था उसकी लिंक मैं पोस्ट कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ये बोनलेस चिकन लिया है. नॉर्मली फ्राइड राइस में इफ़ यू वांट यू कैन बॉयल द चिकन, shred and use that, but today I will be using cutting them into small cubes. मैं इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के और I will be just stir frying it and then we will add to the fried rice. इस तरीके के हमें छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं वो काटना है. और ये मैंने अंडे लिए हैं, 2 अंडे. इसको मैंने I've just put them into the bowl. We'll add a bit of salt. Just a little bit. So हम चिकन को पहले फ्राई कर लेंगे. We'll fry the chicken so that directly we can use it in for fried rice. सबसे पहले हम पैन लेंगे. पैन में थोड़ा सा very little तेल डालेंगे, around 1 tablespoon. Now we'll add the chicken. If you want you can also, as I told you, आप उसको चिकन को बॉईल करके अदरक लहसुन डाल के और अच्छे से गला के फिर उसको श्रेड कर सकते हैं. बट आई थिंक दिस इज़ मोर फास्टर वे एंड चिकन बहुत अच्छा लगता है फ्राइड राइस में इफ वी डू इट लाइक दिस. अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे. Salt as per taste. A bit of just 1 teaspoon of ginger garlic mix, half teaspoon ginger, half teaspoon garlic, and we will saute again. ये चिकन अपने आप ही पानी छोड़ेगा और उस पानी से ही ये चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा. So with the same water it will be cooked very nicely. Now we will cover this for about 5 to 6 minutes and the chicken will get cooked very nicely. So the chicken is done. Now we'll put off the flame and start making fried rice. चाइनीज़ बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो रहती है वो रहती है लोहे की कढ़ाई, because fried rice means it needs a very round and huge type of wok in which we can fry the rice very nicely. So first thing I have taken is kadai. In that I added oil. Now we will stir fry the egg so that we can later add to the fried rice. अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे. सेम कढ़ाई में हम थोड़ा तेल डालेंगे फ्राइड राइस के लिए. गाजर डालेंगे. So now we'll add I have added the carrot. We'll add some spring onions. And we will fry. We just need to fry them because as it is I have used grated
carrots, you can even chop them finely. Now we will add the rice. I'm making for around 5 to 6 people, that's why my quantity is looking a little more. Chinese always has to be cooked on the high flame, तो इसको हमेशा हाई फ्लेम पे ही बनाते हैं. अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे. I have added the black pepper, soya sauce, and we will add some chili sauce. Mix it nicely. Now we will add the egg and we will add the chicken which we had fried. As I told you, you can also add the shredded chicken to it. I personally like these small chunks which we had fried. We won't add salt to it. You can check the salt if you want, because I had already put the salt when I was steaming the rice. So salt आप अपने हिसाब से टेस्ट करके डाल सकते हैं, because मैंने already salt जो है वो चावल उबालते में डाल दिया था. Wow, this is smelling really good, and I really enjoy making Chinese in this type of wok. It's totally optional to add Ajinomoto because some people don't prefer, but just adding a little bit to it gives a really good taste. So we have added Ajinomoto also a bit, and that's it. Fried rice are ready to eat. You can eat with the type of sauces you like, as I had shown you in the video. Lastly, we will add some vinegar to it. And as I told you, नमक अगर आपको कम लगे तो आप बीच में ऐड कर सकते हैं. मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया ऊपर से, because सोया सॉस भी नमकीन होता है, और while boiling the rice also we put salt. So accordingly आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं. तो हमारी chicken fried rice is ready to eat. If you like the recipe of chicken fried rice, please don't forget to like, subscribe and share.